हेलो वेलकम बैक टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो। और ये क्या हो गया, इतने सारे लोग आज आ गए हैं। हालांकि क्रिकेट चल नहीं रहा, आई थिंक सब लोग को भड़ास निकालनी है बारिश के ऊपर। आई थिंक तभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए एवरीवन इज हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी हैव रौनक, अमोघ जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस, रियली रियली ग्लैड टू हैव यू वंस अगेन। एंड अंकित तो मेरा यूजुअल जोड़ीदार है, सो थैंक यू सो मच अंकित अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड टॉकिंग क्रिकेट। बट सबसे पहले एवरीवन प्लीज अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। अमोघ ने लगा दी है, रौनक ने लगा दी है, मैंने लगा दिया, अंकित ने लगा दिया। जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। एंड बहुत कुछ है आज अपने पास बात करने के लिए। रौनक, हाउ आर यू? काफी टाइम नया बैकग्राउंड है एकदम, क्रिकेट विकेट के एकदम कोट्स वोट्स एकदम लगा के बैठा है पीछे। हाउ आर यू? व्हाट्स अप? आई एम रियली गुड। और जितने भी ऑडियंस है सबका, जैसे अभिनव भाई ने कहा है कि स्टार्ट कीजिए अपना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और थर्ड मैन को एक अलग दिशा में पहुंचाइए। इसलिए मैंने भी एक अलग दिशा में पहुंचाने की कोशिश की है कि लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द यूजुअल स्टफ और थोड़ा सा कुछ अलग करते, थोड़ा सा कुछ सेटिंग करते, ताकि आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके फ्रॉम आवर कंटेंट और आप एंजॉय करें ज्यादा। तो फुल हाउस टुडे। यस, मोहित बोल रहे हैं, सुपर एक्साइटेड। वी आर सुपर एक्साइटेड एज वेल। और यस, कल सब अच्छा चल रहा है। एंड हालांकि सब अच्छा पर्सनली चल रहा है, नॉट इन क्रिकेटिंग टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ एशेस, इन टर्म्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। बाकी डिस्कस करेंगे। ओके, गुड स्टार्ट टू द शो। अमोघ, लॉन्ग लॉन्ग टाइम यार। एकदम मस्त दाढ़ी बाल सब बढ़ गए अमोघ के। पिछले बार आया था जब एकदम एकदम क्लीन क्लीन शेव था अमोघ। सो जस्ट टेल अस हाउ यू हैव बीन और क्या चल रहा है। Good यार, all good. Feels back to be back. Feels back to be back नहीं यार, feels good to be back. Sorry. अभी आदत छूट गई है थोड़ी, तो बोलने में भी गलती हो रही है. But yes, I am good. सब अच्छा चल रहा है. I was not able to join because of some personal stuff in my family. So कुछ problems थे, because of which I was away for a bit. But now I am back. I am going to try to make this very very regular now. My attendance, third man तो regular होता ही है, but thanks to you, thanks to Ankit, thanks to हर्षल, रौनक, क्योंकि तुम लोग लाइव शोज करते हो वेरी रेगुलरली, सो आई डू फॉलो देम. सो या बहुत अच्छा लग रहा है. अभी डिस्कशन तो करेंगे बहुत सारा. आई थिंक 2-0 होते होते बच गया इंडिया के लिए. वी स्टिल गेट द पॉइंट्स, बट स्टिल 2-0 होता तो और मजा आता. एंड इंग्लैंड इज रॉब्ड ऑफ अनदर एशेज. अनदर नहीं बोल सकते क्योंकि पिछला वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है, बट exactly, England is robbed of their ashes at home. So yeah, even Harmanpreet kaur ka incident and a lot of interesting stuff worth discussing happening in cricket. So yes. कंप्लीटली एग्री, बहुत कुछ है। आई थिंक आज पिटारे के अंदर से हम बहुत सारे चिट्स निकाल के बात करने वाले हैं। अंकित के बारे में तो पता है, अंकित के घर में क्या चल रहा है मैं ही बता सकता हूँ। मैं अंकित से इतनी बात करता हूँ कि मैं ही बता दूंगा अंकित कहाँ पर है, क्या कर रहा है। सो बट अंकित, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक वंस अगेन एंड एवरीवन इन द चैट एज वेल. दृष्टि, there's Muskan, there's Mohit as well. Thank you so much. Like the video, subscribe to the channel, do the usual stuff and big up everyone in the chat. अंकित, क्या हाल है? यार ऑल गुड यार. आई मीन बट टॉकिंग पॉइंट एज अभी ने मेंशन किया यार, आई मीन बारिश इंडिया में भी हो रही है बट क्रिकेट में ज्यादा हो रही है. ट्रू. तो तूने बात ही बारिश के बारे में करी है, सो वी ऑल नो कि हमें कहाँ पे स्टार्ट करना है. आई थिंक देयर इज ओनली वन प्लेस टू स्टार्ट. आई थिंक इट्स फेयर टू से कि ऑस्ट्रेलिया हैव बीन सेव्ड बाय द रेन. Well, absolutely yes. अगर कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में particularly saved by the rain, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल, आई मीन भले ही ऑस्ट्रेलिया ये एशेज जीत गई है, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन इंग्लैंड हैज बीन अ फार बेटर साइड थ्रू आउट दिस सीरीज. अगर मैं कहूँ कि 5, 10, 15, 20 दिन का अगर टेस्ट मैच हुआ है, तो उसमें से एटलीस्ट 17 दिन जो है इंग्लैंड जीती है, irrespective of the result and all. एटलीस्ट 17-18 दिन जो है इंग्लैंड जीती है. दोज फ्यू मोमेंट्स, 1 घंटे का सेशन, या फिर जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली ने आके कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोज 30 मिनट्स ऑफ बैड प्ले कॉस्ट द मैच. उनको इंग्लैंड को वैसा ही हुआ है, कॉम्प्लेसेंट रहे. आई रिमेंबर सेकंड मैच में हल्की सी बारिश आना चालू हुई थी, तब बेन डकेट ने ऊपर देखा और नेक्स्ट बॉल पे विकेट गया. तो कंसंट्रेशन उन लोग का उस फैक्टर पे ज्यादा है कि बाकी फैक्टर्स क्या प्ले कर रहा है इंग्लैंड का.
not that how they want to play. Australia ने उनके mind game पे खेला, and that actually catapulted into Australia winning those particular two matches in at the front. तो ऑस्ट्रेलिया का जो पुल फैक्टर था ना, वो था उनका क्लच मोमेंट पे ग्रास्प करना, जो वो पिछले 100 साल से कर रहे हैं. I would like to say that Australia the clutch team of the century. मतलब वो करते आ रहे हैं, और 1 घंटे का सेशन जीतते वो लास्ट तक हारते नहीं है, और फिर फाइनली जीत जाते हैं. तो वही किया इंग्लैंड के साथ, कुछ नया नहीं किया, एंड दे वन मे बी 2 or 3 सेशंस पर मैच, not more than that, and they won the match finally. Yeah, I think I agree with the game awareness point. I think Australia is that clutch team. And Amo, coming to you, मुझे एक बात बता कि yes, there have been questions around the the brand of cricket which England plays, and the baseball, which is like the common term in Test match cricket. Yes, I would say कि वो term ने थोड़ा interest बढ़ा दिया है for the fans in Test match cricket, only because England has started to play a certain way. Now जब India ने भी West Indies में खेली थी, they started scoring quickly. Everyone was terming baseball. Yesterday Pakistan did the same, scoring very very quickly, and फिर से वाला term baseball का use हो गया. Are you a fan? मतलब पैनल में सबसे पूछना पाऊंगा. Are you a fan of this? Is this of this brand of cricket? And do you think England can win with this in India or like the subcontinent as well? Yes, I do believe England can win it. Just England. Okay. I don't think any other team can do it at home or anywhere in the world. To be honest, ठीक है. India की बात करने जाए तो I think it's a bit different because India का problem ही अलग है. Against West Indies or against Sri Lanka, I think India does this very well in terms of at least a test game. But I think हमारा problem ये होता है कि we don't go in with the same mindset in crunch games. For example, सबको मालूम है knockouts में is where we are struggling the most. Even in the WTC final, we kind of struggled. We were always chasing the game after day one. We were never ahead of the game. तो I think yes, to answer your question, baseball से मैं काफी ज़्यादा impressed हूँ, and the way England are playing their game. See, I think इसके ना दो perspectives है. Now many people think कि Ashes के day one पे जो declaration हुआ, जो Ben Stokes ने आके declare करा, I think बहुत लोग ये सोच रहे हैं, many people are thinking कि that was a very wrong decision to do because तभी declaration की कोई ज़रूरत नहीं थी. They would have added another 30, 40, 50, how much ever runs, and it would have helped them. But I think it was very courageous, very brave, and मेरे को नहीं लगता कि अगर if I don't remember what the score was at which they declared, but for example, if they declared at 200 and if they got Australia out at 180, I don't think ये questions उठते. It was a wrong decision and all that. So I think फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कंसिडर नहीं करके आप जब कुछ डिसीजन लेते हो, एंड फ्रॉम there the game can go in any direction. I think that was a very courageous move by Ben Stokes and England. The point being, मैं बोल रहा हूँ I am a fan of baseball when England play it is just because they don't leave playing that style even if they lose a game or even a series. ये हम लोग ने देखा हुआ है कि they play the same way. They have decided कि हम लोग को इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट भी खेलना है. That's a full stop. It's not like एक सीरीज हारे and then they went back to playing traditional style test cricket. Australia have been playing traditional, and I think that is why this Ashes series in particular has been so special because there's a side that's playing traditional cricket and there's a side that's playing baseball. Like it's a battle of two beliefs. So I think yes, to answer your question, मैं fan हो रहा हूँ England playing football. But my point is, Ankit, if I come to you, क्योंकि अमोक ने बात करी कि yes, they have been playing the same brand of cricket, but do you do that against Australia in an Ashes series which is as big? क्योंकि अमोक ने ये भी बात करी कि Australia has been playing that traditional brand of cricket and they won the first 2 games from that. So do you think yes, Australia के सामने भी ये work करेगी? Because yes, they did win the game, but let's not forget Australia was on top when 244 in the third test match as well in Headingley. So do you think this approach will work in the long term, say against Australia or like the big sides? I don't think personally, that you change the brand of cricket just because it is a Ashes series or it is against Australia or it is against India. I think the mindset, and I think what baseball is more about, that it is result oriented. Like
last 17 games under baseball. I think the last match was the first draw, and it came under circumstances where you saw 2 days of rain spoils and all, and that's the reason which ended in a draw. But I do feel like going forward, I think as even you mentioned कि क्या ये India में भी work होएगा. I do feel like whenever opposition team comes in India, I think that's the way we expect from them to fight back. कि हम चाहते हैं कि opposition team should look for runs and there, because defend करके तो एक ball तो जाके पैड पे लगेगी, एक डंडे पे लगेगी. That's the common sigma of how Indian cricket has been doing when it comes to home conditions. So हम बाकी टीम से वो expect कर रहे हैं. So I think England is trying to implement it. I think it's more about result oriented. I do feel like कि baseball का एक point of view रहा है जहाँ पे people are seeing they doing wonders with the bat. But let's not forget, I think जो उनकी bowling रही है खास करके from Headingley Test, I think a lot of credit goes Yuki Baseball with the bat has been successful because there has been a good support and good amount of support, I would say, from the bowling department. So I think it has been working well, but every coin has two sides, and it's not like traditional cricket खेलोगे तो you will get 100 out of 100. You are gonna get the circumstances. So I think yeah, it's good, something new for Test cricket and putting Test cricket in the right direction. True, true. I kind of agree with most of the points. And Anshul is here is saying England first two mistakes, day one they declared and weak bowling. Vokes would में एक को खिलाया and दोनों को खिलाना चाहिए था. So yeah, I kind of agree. But to be honest, everything is not lost for England. Yes, 2-1 से Australia is ahead, Ronak, but there's still one game left. I Yeah. think the result तो आ रहा है. Looking at the weather in London, I think there's no chance कि ये match wash out होने वाला है. So Ronak, coming back to you, we go back to the Oval जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था to win the World Test Championship final. Do you think series 2-2 होने वाली है, 3-1 होने वाली है? What do you think? Well, for good, I think series 2-2 होगी, and that is the result at least England deserves the way they have played. जब पहले दो टेस्ट मैच इंग्लैंड हारी थी, उसके बाद थर्ड टेस्ट मैच में मैंने ऑन एयर कहीं तो कहा था कि अब आई डोंट रिमेम्बर वेयर ऑन थर्ड मैच या फिर कहीं और पे, बट थर्ड मैच के प्रीव्यू पे ये कहा था कि इफ इंग्लैंड विंस द थर्ड मैच दे विल विन द सीरीज 3-2. अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, दैट इज अनदर फैक्टर. बट आई बिलीव दैट इंग्लैंड के मतलब क्वेश्चंस का जवाब नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, टू बी फेयर. बस कुछ कुछ मोमेंट्स पे वो हैंग ऑन कर गए हैं, एंड वही वजह है कि वो मतलब पहले दो मैच जीते. बट जब से इंग्लैंड का काउंटर अटैक हुआ है थर्ड टेस्ट मैच ऑनवर्ड्स, दे हैव नो आंसर्स एट ऑल, दे हैव नो क्लू एट ऑल कि उनको क्या स्ट्राइक कर रहा है. एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर मी इज unsettling of Australian batters by Mark Wood. जो उसने डाउट क्रिएट किए थर्ड टेस्ट मैच में, दैट हैज बीन द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर अकॉर्डिंग टू मी. और उसके वजह से कुछ ऑस्ट्रेलिया के माइंड में डाउट्स आ गए कि कैन वी प्ले देम, नॉट दैट वी वांट टू प्ले देम, कैन वी प्ले देम, ये क्वेश्चन आ गया है. और जैसे ही ये क्वेश्चन किसी भी टीम के माइंड में आती है ना, तो दे आर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट पोटेंशियल. एंड ऑस्ट्रेलिया का वही एक रीजन रहा है. इफ वी सी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम थर्ड टेस्ट मैच टू फोर्थ टेस्ट मैच, इवन काफी सारे बैटर्स फ्लम्प बॉक्स अभी तक ऑस्ट्रेलिया के, दे आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स. चाहे आप बात कर ले डेविड वार्नर की, चाहे हालांकि वो तो काफी टाइम से खराब फॉर्म में चल रहे थे, बट फिर भी एक आध अच्छी इनिंग्स आई उनके बैट से. फिर चाहे उनके लोअर डाउन द ऑर्डर बैटर देखें, ट्रेविस हेड वगैरह, जो जनरली काफी अच्छा खेलते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही है उनकी वो फ्लुएंसी. स्टीवन स्मिथ वो कहीं ना कहीं एक तरह से बंद गए बाय पैट कमिंस, मतलब सॉरी बाय द ऑपोजिशन मार्क वुड, कहीं ना कहीं बंद गए उनके पेस के. अब दो ही सेड की जोफ्रा आर्चर का पेस उनको उनको डराता नहीं है. दैट इज नॉट व्हाट ही डज. बट मार्क वुड का जो वो डिलीवरी था इन थर्ड टेस्ट मैच, आई थिंक दैट पुश्ड हिम बैक अ लिटिल. ही वाज इन अ थिंकिंग मोड. जब स्टीवन स्मिथ पिच पे चहल पहल करते हैं, ये अपना ड्रामा करते हैं, तब तक वो एकदम टीम को अनसेटल कर देते हैं, ऑपोजिशन को. बट जब वो कुछ सोच रहे होते देन ही गेट सीरियस, और पिच पे वो उनकी हरकतें कम हो जाती है, जो पिछले दो टेस्ट मैच में दिख रही है इनको, कि उनकी जो वो नॉर्मली करते हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं, पिच पे आके बैट ठोक रहे हैं, वो सब बहुत कम हो गई है. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई कैन फील कि थोड़ा सा फ्लम्प बॉक्स है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग साइड. Yeah, so my next question is to everyone. एक एक करके panel में starting with Amog, then Ankit, and then Ronak. What is your prediction for the final test match at the Oval? Do you think it will be 2-2, 3-1? Will it end in a draw? जो कि मेरे को लग रहा है कि एकदम out है the way England play the cricket.
2-2 2-2. मेरे को Ankit? 2-2 लग रहा है. Yeah, I think fairly 2-2. I guess 2019 was the same outcome, 2-all, and I guess fifth match England ने जीता, तो I'm expecting something similar. I think इस बार थोड़ी ज़्यादा kind of हिंदी में बोले तो भड़ास निकलेगी, and especially I don't know what is going to happen in the stands as well, because we all know England crowd. I think the way Barmy Army and all, I think lot of stuff. So entertaining as a neutrals, but yeah, it's fun. Ashes, yeah, looking good. रौनक? मैंने तो बोल दिया कि इट इज गोइंग टू बी 2-2. मैं तो 3-2 एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे ही मतलब थर्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती, माय आंसर वाज बेस्ड ऑन दैट. थर्ड टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड जीतती है तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट कम बैक इन दिस सीरीज, और वो ही हो रहा था. एंड 3-2 होने वाला था, बट 2-2 इज व्हाट दे कैन यार अभिनव मेरे को ना तुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि मतलब सब लोगों को पता है बट जिन लोगों को पता नहीं होगा, अभिनव इज इन द यूके अभी. तो अभी यूके में क्या माहौल है यार, बिकॉज इट्स लाइक मेरे को आई एक्चुअली फॉरवर्ड टू यूके में किधर है, इज इट अ क्रिकेट काइंड ऑफ एरिया और एनीथिंग, बट you just the country has been robbed of its Ashes series, so abhi it's like UK, the Ashes is like India Pakistan if I'm correct. So it's like UK में अभी क्या माहौल चल रहा है, and what are you expecting? Is it 2-2, 3-1 or मेरे पास ना लास्ट वीक तक इसके दो आंसर थे व्हेन द सीरीज वाज 2-1. लास्ट वीक मैं मैनचेस्टर में था एंड आई सॉ लाइक डे 1 डे 2 वाला जो भी वहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहे थे लोगों के बीच में. नाउ द थिंग इज, ये जो एशेस क्रिकेट ने करा, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंस एशेस बट वुमेन्स एशेस एज वेल. ये सीरीज ने, ये दोनों सीरीज ने, दे हैव इंक्रीज्ड द फॉलोइंग ऑफ cricket in general in the UK. Let's not forget it's not the number one popular sport in the country. So I think after football there is a competition between rugby, there's cricket as well, but cricket is right at the top. And at this moment everyone is so eager and everyone is so happy कि खाली 3 दिन का break था between the test matches, because वो जो लंबा break जब आ जाता है then you kind of get away from all that excitement. You have to start from zero once again. But right now these guys want, जैसे अंकित ने कहा कि भड़ास निकालनी है. Yes, the conversations which I have with people over here, they usually talk about following England cricket now very very eagerly compared to the past. But मेरा सवाल, sorry, तेरे सवाल का जवाब, the thing is, if England would have won this game या बारिश नहीं आती, it could have been 2-2. It was going to be 2-2. But then in the final game, I for some reason feel Australia would have won the game in the fifth test match, because backs against the wall, when no one is backing them, this is their pressure situation. This is the situation they thrive in. So I'm still not ruling out 3-1 in my opinion, because everyone is expecting England to win right at the moment. Can they repeat the way they played in Manchester? But when it's Australia, we all saw the World Test Championship final में भी हुआ, because I am only going from the fact that it's Australia. They have recently won a very very big trophy on the same ground against a very very good side. Yeah. So I feel 3-1 is on the cards. I could be wrong. I hope I am wrong. I think this series deserved to end in a draw only because the way both the teams have played. And but yeah, I still feel थोड़ा मैं 60-40 in favor of Australia at this moment. इसको बोलते हैं करेज. इंग्लैंड में बैठ के बोल रहा है 3-1. I just don't know यार. पता है क्या कि yes, एक चीज होती है कि yes, do you think Zach Crowley can do something like that again? That is the thing. क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ना कि यार ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है कि एक ही गलती 2 बार करेगी. They knew कि ये पिच पे हमें एक स्पिनर खिलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं कराया. Next match, if they get Todd Murphy in, they have already rectified that mistake. So I don't know, with Australia you can never take that chance. हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर इंडिया भी होती ना, that could have been ended 2-2 the way England played. But yeah, that's my verdict. But moving on, I think हमारे पास बहुत सारे, I think the panel has literally given it in the favor of England. And chat में भी let us know क्या लगता है आपको सीरीज का क्या फाइनल रिजल्ट होने वाला है. अंशुल इज सेइंग ये टेस्ट इंग्लैंड लूज करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, फिर जाना कम हो जाएगा. अवे टूर इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान है. यस, विल टॉक अबाउट दोस टूर्स रियली सून. बट उसके पहले एवरीवन जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. शेयर द कंटेंट if you like it, and follow everyone on social media platforms. Third Man Cricket Show is flying high everywhere, so just keep supporting us. And moving on, the next topic which we are going to talk about is कि हमने स्टार्ट ये टॉपिक से करा था बारिश की वजह से. सो इंडिया वाज प्लेइंग इन वेस्ट इंडीज, जहाँ पे एकदम कड़कती धूप निकलती है. जब भी हम मैच देखते हैं हमें लगता है कि बहुत ही गर्मी होगी कैरेबियन में. बट दैट्स नॉट द केस सैडली राइट नाउ. वेस्ट इंडीज
needed 289 runs, if I'm not wrong, on the final day, and 8 wickets were needed by India. So unfortunately, we know कौन winner था वहाँ पे. It was rain again. आज सुबह उठ के मैंने देखा कि चलो, मैंने सोचा था कि चलो पाकिस्तान का मैं मैच देखूंगा उठ के. दे वर बैटिंग रियली रियली वेल. फर्स्ट सेशन के बाद मेरे को लगा चलो थोड़ी धूप निकली है, शायद कवर्स आ जाए. देन मैं 2-2 घंटे बाद का अलार्म लगा लगा के उठ रहा था कि चलो 7 बज गए, नहीं अभी तक कुछ नहीं, 9 बजे अभी भी कुछ नहीं, 11 बज गए कुछ नहीं, देन स्टम्प्स हो गया. ठीक है. सो रेन प्लेड अ बिग बिग पार्ट ऑन डे 2 एज वेल. सो direct question: do stadiums at this moment, Ronak, need retractable roofs, especially for test match cricket? Yes, absolutely. I mean, for test match cricket, not just in मतलब हर कोई तो afford नहीं कर पाएगा, to be very fair. I mean, the countries like West Indies, जहाँ की if I say क्या हालत है in terms of sponsorship, वो पोर्ट ऑफ स्पेन में डोमिनिका की स्पॉन्सरशिप लेके घूम रहे हैं. मतलब विजिट डोमिनिका. तो उनकी स्पॉन्सरशिप की हालत बहुत टाइट है, एंड दे डोंट हैव मनी एट ऑल. तो आईसीसी विल हैव टू डू ऑल द फाइनेंसिंग, एंड I don't see ICC adjusting to that structure as of now. उन्होंने T20 पे पूरा फोकस कर दिया, and they are into expansion of T20 network around the globe. 96 countries, if I'm not wrong, अभी T20 का पार्ट है, and they are planning कि 2025 तक 125 कंट्रीज उनके T20 के स्ट्रक्चर में आ जाए. That is their main focus, main goal. टेस्ट का भी उनके उनके दिमाग में कुछ है नहीं. तो कंट्रीज लाइक वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, मे बी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एंड द रूल इज कि आईसीसी अगर कुछ करेगा, कुछ इंप्लीमेंट करता है, तो दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद एवरी कंट्री, एवरी बायलैटरल सीरीज, कि वहां पे फिर आपको लगाना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट सीइंग अगर कोई पर्टिकुलर स्टेडियम इंडिया में करता भी है कि रिट्रैक्टेबल रूफ हमने लगा दिया है, स्टिल आईसीसी वोंट अलाउ इट. दैट इज द रूल. अगर कुछ किसी सीरीज के लिए अलाउ करता है आईसीसी, दे विल हैव टू मेक श्योर कि वो चीज अलाउएबल हो फॉर अदर कंट्रीज एज वेल. तो आई एम नॉट सीइंग अ रिट्रैक्टेबल काइंड ऑफ रूफ जो बिग बैश में शायद एक किसी वेन्यू पे है. वो आई एम नॉट सीइंग हैपनिंग इन टेस्ट क्रिकेट एवर. I mean, I want it though, but I am not seeing it happening across all the nations ever. भले ही सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अफोर्ड कर सकते हैं, but I'm not seeing it happening. Amog, Ankit, what do you think? कर सकते हैं. आई थिंक रौनक रेज अ वेरी गुड पॉइंट कि कितने बोर्ड्स अफोर्ड कर पाएंगे, दैट इज अनदर टॉपिक. मेरे दिमाग में और एक सवाल उठता है कि हैज दिस गॉट एनीथिंग टू डू विद द शेड्यूलिंग ऑफ द गेम्स, कि यार शेड्यूलिंग गलत हो रही है क्या? बिकॉज मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन कि there are some areas that get a lot of rain, but matches वहीं पे schedule किए जाते हैं. So I would just like to raise this question, and I would like to know कि अंकित, अभिनव, रौनक, तुम लोग क्या सोचते हो उसके बारे में कि शेड्यूलिंग का कुछ सीन है क्या? Is it got to do something with scheduling? Maybe not in England, I'm expecting, because I think, but it was quite surprise as well. जो 4 टेस्ट खेला गया था, I guess 10-12 days का gap, so that was a bit surprising. But I think it has lot to do with जो अभिनव ने जो question raise किया कि roofs and all, because then lots of things have to be considered. Like generally, to test cricket में I think for pacers, I think air plays a crucial role for them to get the swing. Now if that is considered and roofs and all are applied, I'm not sure कि कितनी help मिलेगी. But another point is कि rather than जो आईसीसी के हिसाब से भी अगर देखा है, I'm not sure कि roofs के लिए कितने जल्दी approval and all मिलेगी. Maybe आप specifically you can go with England where you can ask them for, because इंग्लैंड में जो एक चीज अच्छी लगती है मुझे कि जो भी 5 स्टेडियम से उधर ही टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है. इट्स नॉट लाइक कि 10-12 स्टेडियम्स गेट दैट लग्जरी टू होस्ट एंड टेस्ट मैच, सो इट विल बी इजी फॉर देम. बट आई डू फील लाइक कि बेटर देन दैट आईसीसी माइट थिंक ऑफ माइट टेम्प्ट रादर कि शायद रिजर्व डेज को एंड ऑल अप्रूव किया जाएगा. दैट्स आल्सो बिग थिंग, बट आई डू फील लाइक कि कंपैरेटिवली देन रूफ्स, आई थिंक मे बी आईसीसी माइट थिंक इन अ डायरेक्शन वेयर they may approve reserve days for specific conditions. So, Ronak, my next question to this is कि यार अभी हमने देखा, like on the screen you can see as well all the 3 matches being like a day and a couple of games being decided because of rain. It's the ICC World Test Championship cycle which is going on. ठीक है, so it's not like, yes, the matches are happening in respective countries and boards will have a look at it and have a say in it.
don't you think this is ICC's time to like, no, we need this if we want the best two teams to play the final? Because let's not forget, rain can literally decide the that first second wala spot जो भी 2 साल बाद होगा. Do you think this is where ICC comes in and uh, you know take that initiative कि no, we need that, and not everything is not just on जो respective boards है countries के? देखो यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर्स हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा, नॉट जस्ट अबाउट रिटेक्टेबल रूफ्स. रेन को एक बार साइड में रखते हैं. फर्स्ट थिंग इज डीआरएस और ये जो जितने भी टेक्नोलॉजी सिस्टम आए हैं, अगर अब हम कहते हैं कि वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है. कभी कभी डीआरएस और ये का अगर डिसीजन गलत होता है तो वी फुल ऑन फ्लंग ऑन आईसीसी की इसको हटा दो या फिर इसको इंट्रोड्यूस कर दो या फिर ऐसे करो वैसे करो. दैट इज देयर. अब फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं आईसीसी ने अप्रूव कर दिया रिट्रैक्टेबल रूफ्स को और लगा दिया स्टेडियम्स में. द टीम व्हिच इज बैटिंग एट दैट मोमेंट will have a significant advantage. One point Ankit mentioned over here कि ना wind रहेगा, ना swing रहेगा, environment controlled रहेगा. वहां पे आपके shot playing easy हो जाएंगे. वहां पे आप बॉल को आप चाह के भी swing नहीं करवा पाएंगे, चाहे आपकी बॉल पुरानी हो नहीं हो. All the things will be taken out of the game, जो कि टेस्ट मैच का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट कंडीशंस को फेस करने पड़ते हैं. नए बॉल से, पुराने बॉल से, नए कंडीशन में, दिन के टाइम में, रात के टाइम में. अगर रिट्रैक्टेबल रूफ्स हो जाएंगे तो आपको ना वेदर कंडीशंस में कोई फर्क गिरने वाला है, ना आपको बॉल के कंडीशन से कोई फर्क गिरेगा मोस्टली. और उसके बाद तीसरी और चीज आ जाएगी कि आपको टॉस होके टीम जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है और वो ना ओवरकास्ट कंडीशंस देखेंगी. मतलब एक वो बेनिफिट का कह सकते हैं कि है कि फिर टॉस का फैक्टर निकल जाएगा, लेकिन फिर वापस से टेस्ट मैच जो है T20 मैचेस बन जाएंगे जहां पे हर टीम बिकॉज दे कैन प्ले द बॉल अलोंग द लाइन जज नहीं करनी पड़ेगी उनको. तब उनको पता है कि किस डायरेक्शन बॉल जाने वाली है, एंड दैट विल बिकम अ ह्यूज फैक्टर. अब आप एनवायरनमेंट में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सको रिट्रैक्टेबल रूफ के साथ स्टेडियम में कि यू मतलब do the exact kind of or make the exact kind of environment that is outside, and that will be huge cost. That will come with a huge cost. मतलब एक एक्स्ट्रा दिन अगर टेस्ट मैच में रखना है आपको रिजर्व डे, that is very challenging because सिर्फ वो एक्स्ट्रा दिन आप नहीं रख रहे हैं. That comes with a lot of cost. आपको ब्रॉडकास्टर्स को, आपको मीडिया पर्सनल्स को, आपको पूरे ग्राउंड को कस्टम करने के लिए. इवन वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर 6 दिन का टेस्ट able to do it just because 6 दिन का करने के लिए टेस्ट मैच में 5 दिन जितना खर्चा करना हो रहा है उसका प्लस 30% ऐड करना पड़ेगा जस्ट फॉर वन डे. Okay. तो उनके लिए 6 दिन का पॉसिबल नहीं है. तो इतना सारा जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पुल ऑफ द एनवायरनमेंट फैक्टर. और साथ में रिजल्ट्स जो है फिर आप जो टीम बैटिंग कर रही होगी आप बोलेंगे वो टीम गॉट लकी. Yeah. So Ronak, the next point is towards Amog and Ankit. कि चलो ठीक है, I kind of agree with most of the things you guys said. कि यार it is not that easy to put up roofs every stadium में. So Amog, the next point जो सब लोग discuss कर रहे हैं, I think on Twitter as well, क्योंकि आज बहुत ही जोरदार धूप निकली है मैनचेस्टर में. Okay, so this is what day 6 for the Ashes test जो भी हम कहें. Do you think reserve days need to be need to be put into place for every game जहाँ पे there is like a rain possibility, even like a 1% possibility? Yeah, I think it can be a possibility, reserve day. But then again, if the reserve day is being made like a rule, is what we are saying, so it should be implemented in every and in all games that are being played all around the world. राइट. तो आई थिंक आईसीसी को कुछ भी करने में चैलेंज ये चीज है कि वो जो भी करेंगे दैट विल ऑटोमेटिकली बी यूनिवर्सल. बिकॉज एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टीम के लिए वो नहीं कर सकते, बिकॉज एंड दैट इज नॉट व्हाट द आईसीसी इज नोन फॉर. शर्मा जो बोल रहा है कि आईसीसी कैन बी फ्लेक्सिबल विद देयर रिजर्व डेज का रूल, वेयर इन अंपायर एंड मैच रेफरीज कैन से कि लास्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच इज लॉस्ट ड्यू टू रेन, सो मैच कैन गो इनटू रिजर्व डे. दिस कैन बी अ सॉल्यूशन. Yeah, so that is what we mean by a reserve day. But again, it can be flexible, but again बहुत सारे factors consider करने पड़ेंगे. Also, हम लोग इसके previous topic में जो बात कर रहे थे about the roof thing, I think जो bowlers swing
बॉलर्स को स्विंग करने की एबिलिटी और विंड, हम लोग उसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे, आई थिंक दैट इज वन फैक्टर. अनदर साइड टू लुक एट इट इज दैट बॉल को स्विंग होने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब देर इज अ पार्ट ऑफ द बॉलर स्किल एज वेल उसमें. जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं कि शेन वॉर्न, बॉलर्स लाइक शेन वॉर्न, उनको बॉल स्पिन कराने के लिए द पिच डिड नॉट मैटर. पिच कैसे भी हो तो वो बॉल स्विंग कराते ही थे. सो आई थिंक a lot of it is the bowler's skill as well, कि whatever the conditions are, if you do it correctly you can still swing the ball irrespective, because ball swing कराने के लिए the position of the ball is very important, कि shiny side कौन से side में, rough side कौन से side में. So I think that is another factor we need to consider. And yeah, जैसे मैंने बोला कि अगर ICC को कुछ करना है तो it needs to be universal, it needs to be implemented in each and every test match. फिर चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो या फिर एशेज हो, इन whichever test game, but the reserve day rule can be implemented. It looks like a very vital one, because फिर जैसे तूने बोला कि आज मैनचेस्टर में धूप निकली है, so I think England had the chance to make it 2-2 had it been a reserve day in place, and it was not just about this test match, it was about the series would have been alive if it was Right. 2-2 right now. Exactly. So- That's my next point to Ankit and then Ronak to end this topic. कि ये जो साइकिल है, नाउ देयर इज अ लॉट एट स्टेक इन टेस्ट मैच क्रिकेट. ठीक है, पहले हम खाली सीरीज खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले 3 मैच सीरीज, 5 मैच सीरीज, बायलैटरल्स, जो भी हम खेलते थे. बट नाउ इट्स अ बिग स्टेप इन टेस्ट मैच क्रिकेट, जहाँ पे 2 साल के लिए 10 टीम्स फाइट इट आउट फॉर 2 टॉप पोजीशंस. And maybe a reserve day is the decider in, say, a second spot and the third spot. Yeah. Maybe like first team is like the best and compared to everyone else, but like the second और third team के बीच में there's like even 1% chance कि अगर बारिश आती है तो ये वाली टीम चली जाएगी, आगे नहीं आती है तो ये वाली टीम चलेगी. Now the discussion is around that. So do you think कि reserve days at least in, say for example like World Cup, pretty much ये टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप है देखा जाए तो, so do you think in especially at this stage अगर ये नहीं होता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, आई वुड स्टिल एग्री कि यार नहीं चाहिए मे बी रिजर्व डे, बट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डू यू थिंक this is like a must? Yeah, I think definitely, because apart from players or even the officials, I think fans, a lot of money has been put by fans as well, and you want that to be. You can't say कि यार I mean हमारा क्या लेना देना fans से, because they are part of the game. Like अभी भी इंडिया में day 5 के लिए भी people kind of buy tickets. They know what is going to happen, but still that expectation that match may go to day 5. So that's the thing. Reserve day, I mean, it's not like कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे. It's like कि जो day 5 में हो रहा है, day 4 में हुआ था, वही वो एक्सपेक्ट करे. अगर बारिश एंड ऑल आई तो देन वी एक्सपेक्ट कि एक और डे हो, एंड आई थिंक इट विल ब्रिंग अ lot of things. Like WTC final में, it was it brought a result for us. नहीं तो the mace would have been shared, kind of something like that. But yeah, I think that's one thing. But I definitely feel like कि as of now roof के लिए बहुत सारे disadvantage है. Because एक और जो point अभी तक like we didn't discuss was कि roofs में ना अगर I mean ball batters मार नहीं सकते. And BBL में हालांकि एक rule है कि it can be called as 6, but I'm not sure international cricket में then rather hitting a 6 in the crowd it is more harder. Rather you can just hit the ball up in there, and a miss hit can do the job. So I think वो भी एक चीज है, वो तो then it can favor the batters. But reserve day is something ICC might get influenced, because team test match affect हुए. If Pakistan and Sri Lanka वाला game if that doesn't get result, it may put things into consideration for MCC or someone like ICC. Yes, एक छोटा सा पॉइंट है मेरे लिए, सॉरी टू go डिस्टर्ब, ahead. बट रिजर्व डे का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आई थिंक अनदर टॉपिक आईसीसी विल नीड टू कंसिडर इज द फैक्ट ऑफ व्यूअरशिप एंड ऑल दैट. बिकॉज अगर एक टेस्ट मैच का डे 5 संडे है तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल यू कैन एक्सपेक्ट टू वॉच, या फिर पीपल जो स्टेडियम में आने के लिए बुकिंग करेंगे, यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू कम ऑन अ संडे. बट रिजर्व डे में अगर जाता है तो दैट एंड्स अप बीइंग अ मंडे, तो मंडे को पीपल आर नॉट फ्री मोर देन अ संडे एज कंपेयर टू अ संडे. सो आई थिंक व्यूअरशिप माइट गेट अफेक्टेड एज वेल. अगर हम लोग रिजर्व डे की बात कर रहे हैं तो उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि द डे 5 इज अ सैटरडे, सो दैट अगर रिजर्व डे में भी गया देन इट्स अ संडे. So I think that will, all these factors will matter a lot. So it's like it's not going to be easy for the ICC as well. Just to add on to that one more point, अपन ने सबने कहीं ना कहीं कंटेंट इंडस्ट्री में काम किया है. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब जो पॉइंट्स पुट आउट हुए कि यस देयर शुड बी अ रिजर्व डे, एवरीथिंग इज फाइन, बट जस्ट
think in terms of the broadcasting type, broadcasting team. I mean, Yeah. अगर मान ले 6 दिन का टेस्ट मैच रखा है रिजर्व डे के साथ, जस्ट इन केस वो मैच 4 दिन में खत्म हो जाता है, सो यू विल हैव टू क्रिएट अ बैकअप प्लान कि कंटेंट क्या आ जाएगा अगले 2 दिन. अगर 6 दिन तक जाता है तो तेरा वो कंटेंट बनाया हुआ खराब हो जाएगा, और अगर तूने नहीं बनाया तो वो पंगा हो जाएगा. दैट इज अ वेरी दैट इज अ वेरी Yeah. ह्यूज थिंग. वहां पे पैसा, सॉरी टू इंटरप्ट यू अभिनव, बट बहुत बड़ा एक पैसा का इन्फ्लक्स लगता है टू क्रिएट एनी कंटेंट, चाहे वो छोटा सा वीडियो एडिट करके आपको अपने चैनल पे पुश करना हो. तो इट विल बी नॉट जस्ट वन डे एडिशन टू द टेस्ट मैच. अब मैं मानता हूँ वर्ल्ड कप जैसा सीन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इट इज नॉट एन ओडीआई और T20 की आप कुछ घंटे में कंप्लीट कर दोगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इवेंट्स की बात करूं, टू एक्सटेंड एन इवेंट फॉर वन डे, I mean, cameraman, fooding, logistics, support staff, the commentators, उनका भी कहीं ना कहीं ये scheduling रहेगा कि मतलब मेरा commitments है. Everyone in the whole environment, we just think about the perspective की results क्या आएंगे. If we think about the other part, because I mean, I have been part of that influx as well. तो पता है लॉजिस्टिकली इट इज अ ह्यूज चैलेंज टू अकम्प्लिश इवन वन एक्स्ट्रा आवर जो स्केड्यूलिंग है उससे ज्यादा करना. तो टू कंसिडर कि एक और एक्स्ट्रा दिन उसमें ऐड कर दिया जाए, और मतलब टेस्ट मैच अगर ऑर्गेनाइज करने में अगर मान ले 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है ना, तो 6 दिन करने का, 5 दिन करने का अगर 1 करोड़ है, 6 दिन Yeah. करने का 1.35 1.4 crores, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज वन डे. तो वो बाई 5 या बाई 6 होगा. Yeah. It is 30-40% addition to that just Yeah. because of the Yeah. schedule. Yeah, but I kind of agree with most of the points. That is pretty much जो भी operations, logistics and जो भी उसका लेना देना है. But the point is you need a result है ना, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे हैं, it's an early stage of a world test championship cycle जो भी. As soon as we get closer, when you know कि हमें ये result चाहिए and we hope कि बारिश ना आए, and at that point do you still feel कि यार nah, this is not fair on the point, because this wasn't fair on England. We all know कि England should have won this game quite convincingly. So, and that resulted in maybe them not winning the Ashes. So that is a pretty big thing क्योंकि England ये वाला मैच जीत जाती, they just had to win one more game. So that is my point कि यार इन मैं ये नहीं कह रहा कि जब भी इंडिया में जब गर्मी है वो टाइम पे आप रिजर्व डे रख लो. आई एम जस्ट सेइंग इंडिया में एनीवेज मैचेस 3-3 दिन में खत्म होते हैं. ओके, तो दे स्टिल प्लान फॉर लाइक 5 days, जो भी कंटेंट या जो भी they still plan with a view for like 5 days, and most of the times we see कि 3 days max, fourth day का first session में मैच खत्म हो जाता है. So that anyways goes in the bin. So that is my point कि जहाँ जहाँ पे you need कि in a country like England जहाँ पे they call it the British summer, but we all know कि 3 दिन वेस्ट हो गए बारिश की वजह से. So that is my point कि यार जहाँ पे it is a necessary, maybe like a 1% chance, there you should have it. Yeah, Yeah. absolutely, they should have it. And the only point is, अगर ये अभी 3 दिन लगातार मैच बारिश की वजह से खत्म हुआ, तो we are discussing this point. I'm agreeing to your point, but अगर नेक्स्ट 4-5-6 सीरीज लगातार रिजल्ट्स अगर 2-3-4 दिन में लग गए, तो अगेन द टॉपिक विल स्टार्ट कि 4 दिन का टेस्ट मैच कर दो, 5 दिन का मत करो. That will also be a discussion again. I mean, But that's not going आपको to happen. वो तो हमें भी पता है कि they are not going to change 5 day वाला format, 4 day वाला format. I don't think so that's going to happen. But ये वाला तो extend just to have a result. हम ये नहीं कह रहे कि reserve day हर मैच में रखो, but for a result to be out, especially in like a world test championship cycle जो 2 साल खेली जाती है, अगर आपने 2 साल क्रिकेट खेल लिया and then you are out because of the rain, what was that, how is that justified for the teams who have played the cricket? That is my point. So but anyways, moving on, I think we still have a lot to discuss, and it's a pretty ambiguous topic. Yeah, roofs ka, reserve day ka, so everyone will have different opinions, and I think we'll soon see if the ICC or like the boards are in agreement कि हमें आगे चाहिए roofs or reserve days. Then we'll talk about it again. So anyways, moving forward from ifs and buts का topic to uh, इसको कैसे पुट अप करूँ यार मैं ये टॉपिक को. आई थिंक लेट्स जस्ट गेट इट ऑन स्क्रीन, एंड देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक एक करके आप लोग अपने अपने पॉइंट्स मेरे को इस पे बता सकते हो. So I'm just putting it up on the screen, and I think everyone in the chat as well will have a different opinion. So this is the topic I'm going to share now. What has everyone seen this incident? Yeah. Yeah. So firstly,
मैं chat में भी अगर कोई है ready to answer this, do you think this was coming when especially in nations like जहाँ पे DRS नहीं है, you know, when you're not allowed, and the kind of comments जो post match presentation में हरमनप्रीत कौर ने लिए थे. Firstly, let's just start with the basic point. Was it justified starting with Amog, Ankit, and Ronak? Yes or no का जवाब दो. नहीं यार, I don't think it is justified to react in this way. मतलब yes, there are decisions that can go in your way, there are decisions that can not go in your favor, because at the end of the day जो decision ले रहे हैं they are also human beings, but to react in such a way, then to मैं बोलूँगा कि what she said in the presentation is, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि it's completely fine, it's, but मैं बोलूँगा कि it's still okay. But the way she reacted when she lost her wicket, I think umpire के लिए उसने जो react किया बाद में stumps, I think she hit the stumps with her bat as well, huh? So Yeah. I think that's not justified in any way, not according to me exactly, because I think at the end of the day जो भी होता है, point number one, the umpire is also a human being, and point number two, cricket is above everything यार. मतलब you are not above cricket is above you at the end of the day, whoever Yeah. you are. So I think ऐसे react नहीं कर सकते यार. मतलब no, this is a straight answer is no. Okay, so just a small follow-up question. गली क्रिकेट खेली Amog? गली क्रिकेट की बात अलग, गली क्रिकेट को पूछा तो मैं रिएक्ट करूंगा ऐसे. गली मजाक क्रिकेट की बात थोड़ी कर रहा हूँ. तो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो तो आईसीसी का टैग भी है उसके टी शर्ट पे, तो उसकी बात हाँ, कर रहा हूँ. मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. वो तो मालूम है. मेरे को खाली ये पूछना था कि तूने कभी स्टंप उड़ाया क्या बैट से, बस मेरे को ये पूछना था. सो बढ़िया. मैंने बैट नीचे पटका है, मैंने स्टंप नहीं उड़ाया. बैट नीचे पटका है और फिर बाद में कभी नहीं पटका क्योंकि वो फिर बैट टूट गया मेरा. Okay, Ankit, Ronak, what do you think? Definitely, I think not justified. I mean, because I mean, अब जो भी I mean overall umpiring आप throughout the cricket देखोगे तो कितने सारे decisions umpires ने गलत दिए हैं. Obviously, we have the luxury of the DRS उस series में नहीं था, but this is not acceptable behavior. I mean, कितनी बार हुआ? I think if you ask New Zealand cricket team, I think 2019, I'm not sure कि अगर if they would have reacted something like that, they had more than I would say 10-15 reasons to react in a certain way, but not acceptable here, because we don't expect this kind of things from professional players. I think women's cricket हो, men's cricket हो, वो फिर level भी चाहे कोई भी हो, but we expect professionalism to be at its best, irrespective of certain things not going in your way. But we hope so कि ना हो आगे जाके भी कोई भी format में या फिर कोई भी किसी stage पे. I think we expect everyone to be professional, irrespective of how the game goes. It can go against them, but I mean, this is part and parcel of the game. Yeah, true. I think after Amog and Ankit's answer, I think Ronak का भी मेरे को आंसर पता है क्या ही होने वाला है. Until and unless Ronak has a different perception about this, कि नहीं, I think ये तो आने ही वाला था, because we have all talked about all the wrong umpiring, गलत decision, ये वो DRS के होने के बाद भी ये वो. But yeah, I think I kind of agree that this was not just here. Ronak, कोई different opinion है तेरा? मेरे दो ओपिनियंस है, मतलब मैं 50% करता हूँ इस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस. द फर्स्ट रीजन इज मैंने क्लोजली ये सारे मैचेस फॉलो किए थे, एंड इफ आई टॉक अबाउट हाउ द डिसीजंस वेयर टेकन, जब रिव्यू भी लिया गया, डीआरएस नहीं था बट अंपायर से आप पूछ सकते थे कि वेदर आई वाज आउट और नॉट. जब रिप्लेस भी शो कर रहे थे ना, तो इट वाज अ वाइड एंगल रिप्ले, इट वाज नॉट फ्रंट अंपायर की कैमरा वाला रिप्ले या फिर विकेट का कैमरा. There was no camera as such. जो फील्डिंग पोजीशंस के लिए वाइड एंगल कैमरा दिखाई देता है ना, जो पूरा स्टेडियम को दिखाता है, those cameras were used to show कि LBW है कि नहीं, वो भी साइड से. I mean, that was absolutely ridiculous. मतलब आप LBW का डिसीजन सामने से नहीं दे रहे हो, साइड से दे रहे हो. I mean, how justified is that? I have no idea. I don't agree with how Harmanpreet reacted to it. But the thing is कि umpiring का standard plus इतना poor conditions of play was not justifiable according to me. उसका frustration I can understand, not the way she reacted, but the way she felt. Because अगर आपको तभी स्मृति मंधाना इसके बाद उन्होंने opinion दिया अपना कि जो भी balls pad पे लग रहे थे were given out. I mean, they were not even thinking of the second opinion कि
शायद स्क्वायर लेग वाला अंपायर से पूछ लें, या फिर मैं खुद एक बार थर्ड अंपायर से डिसीजन ले लूं कि वो कैमरा एंगल्स चेक करे। थे ही नहीं कैमरा एंगल्स चेक करने के लिए, तो वो चेक करेंगे कहां से? that was the question. Now that was the first part. I agree how she felt about it, but now the 50% part of it, I don't agree with how she reacted, just because it is not justifiable. Being a senior statesman, और आप टीम की कैप्टन है, 2 मैच का बैन लगा, it is not about कि आप 2 मैच नहीं खेलेंगे, it is about you are the best batter for the side, it is about you are the best captain for the side. आप अगर 2 मैच नहीं खेल रही है तो टीम में एक एनवायरमेंट में एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। इंडियन टीम का वैसे भी विमेंस का परफॉर्मेंस, आई मीन अगर देखें तो इस सीरीज से पहले वाज टू एन स्टैंडर्ड अच्छा था, बट लूजिंग अ मैच टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओडीआई, that cannot be justified based on umpiring decisions. Or Harmanpreet Kaur ka frustration was not about she being given out. It was more about I would say कि losing to Bangladesh, that was catapulted to that reaction. मतलब वो मतलब बॉक्स बन गया है। पहला मैच हारने का, सेकंड मैच जीता इंडिया ने, लेकिन थर्ड मैच जीते हुए पोजीशन से हारने का मतलब, इफ यू रिक्वायर 20 रन्स ऑफ 30 ऑड बॉल्स और आपके पास 5-6 विकेट बचे हुए हैं and you blame umpiring post that is not justifiable at all according to me, अगर अंपायर ने एक डिसीजन गलत भी दिया है तो। and that was also after हरमनप्रीत got out, जमाइमा रोड्रिगेज थी, अमनजोत कौर थी बैटिंग क्रीज पे, जब इंडिया को 20 रन चाहिए थे, 30-40 बॉल में कुछ थे। In from that phase to tying the match, I don't know how you took the match to that position, और उसके बाद blame करना अंपायरिंग को। और मुझे वहां तक भी दिक्कत नहीं है, हरमनप्रीत कौर ने बैट मारा, वहां तक भी दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है हाउ शी बिहेव्ड विद द अपोजिशन कैप्टन। जब ट्रॉफी साथ में उठाई उन्होंने, तो हरमनप्रीत कौर वर्बली सेड टू हर काउंटर पार्ट निगार सुल्ताना, कैप्टन अपने अंपायर को बुला लो ट्रॉफी साथ में शेयर करने के लिए। I mean, you cannot react in that manner with your opposition counterpart. वहां मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस पार्ट से लगी है। अंपायरिंग को ब्लेम करना was justifiable, बैट से विकेट को हिट करना 50-50 पे मूव है, बाकी सारी चीजें मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, but to insult your opposition captain is not justifiable at all for me. Yeah, and wasn't it कि बांग्लादेश में हुआ था कि जहाँ पे शकीब अल हसन ने भी आई थिंक रिसेंटली उनके आई थिंक उनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हुआ था कि कहीं पे हुआ था, आई थिंक आई रिमेंबर शकीब अल हसन आई थिंक टेकिंग आउट द स्टंप्स एज वेल विद हिज बैट, और उसने तीनों उड़ाए थे। आई थिंक हरमनप्रीत ने आई थिंक एक ही उड़ाया, तो शकीब ने तो 3 उड़ाए थे। सो आई थिंक उसमें आई थिंक कम से कम 6 या 7 मैच का तो बैन लगना चाहिए। बट या जोक्स अपार्ट, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद एवरीवन। कितने स्टंप उखाड़ते हो उस पे बैन लगता है क्या? मतलब नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हरमनप्रीत का एक लगा ना इसलिए। तो कह रहा हूँ कि बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक द बिहेवियर वाजंट जस्टिफाइड एंड थोड़ा ज्यादा ड्रैग ऑन कर गया। आई थिंक आई एग्री विद रौनक पॉइंट की काफी ड्रैग कर दिया हरमनप्रीत कौर ने इसको। हाँ, बट नेक्स्ट अगर मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि अगर ये विराट कोहली वगैरह कोई करता so then क्या रिएक्शन होता, that was going to be a reaction. But anyways, चलो moving forward, I think there are a few people watching this stream, so please like the video, subscribe to the channel, everyone. Akshat says horrendous umpiring. Yes, Akshat, I completely agree. And with Ronak's point as well कि यार there's not enough evidence for for the bowlers, for the batters, क्योंकि let's not, मैं तो ये rule ना हमेशा मानता हूँ कि bowlers get 6 chances, batsmen get only 1. ठीक है, that is the reason I just feel it should be a bit fairly treated, but otherwise I'm more than okay. So we've got a couple of more topics to discuss moving forward, and it is about the World Cup, जो कि यहाँ पे हमने पूछा था कि any talk about India versus West Indies ODI and then the World Cup. So स्क्वाड तो आ गई थी, सॉरी वेस्ट इंडीज वाली स्क्वाड तो आ गई थी, एंड we still had a few opinions on that, but now that the World Cup is coming up, हमें 3 ODI खेलने हैं versus West Indies, minimum 5 हमें खेलने हैं I think in the Asia Cup, and then we play 3 against Australia if I'm not wrong. So 11 ODIs before the World Cup. So मैं एक एक करके सबसे पूछना चाहूंगा कि let's pick up Wasim Jafar's point. He has given his 15-man squad for the World Cup. Do you agree with this 11? या क्योंकि अभी 11 मैच बचे, you would expect कि you have like a fixed 11 or like a fixed 15 to move forward. So let's just bring that up on screen and let's just talk about your opinion, starting with Amog. What do you think make of this team by Wasim Jafar? Do you think any changes for you, or you will have like a pretty similar squad? This is Indian squad for the World Cup. अच्छा, ये squad है या ये 11 है? He has just picked it.
Oh, okay. Rohit, Gill, जैसे Dhawan, 15 का स्क्वाड है. Kohli, Shreyas Iyer, Rahul, Hardik, Jadeja, Samson. Wow. Akshar, Kuldeep, Bumrah, Siraj, Shami, Thakur. Okay, so चहल का नाम नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे. Okay, so there's no Chahal. I would want Yuzvendra Chahal to be in place of whom वो बोलना मुश्किल है. But हाँ, Chahal for sure. और एक चीज I would like to keep someone like Surya Kumar Yadav in the squad at least, if not in the playing 11. Again, maybe against. I'm sorry for all the Samson lovers, even I am one, but maybe against Samson, I would like Sky to be there. Dhawan is a very interesting thing because Dhawan has performed well in white ball cricket for India whenever he has got the opportunity to. But again, Rohit, Gill, Dhawan, there are three openers. So out of the three, one will have to sit out because I am expecting Virat will take the number three spot irrespective. So if Rohit and Gill open, then Virat comes in at number three. Iyer or Sky come in at number four. I would go ahead with Rahul at number five and then so on. But हाँ मतलब ये कुछ बुमराह सिराज शमी ठाकुर is okay. I would even like to think about someone like Yash Dayal or एक Arshdeep. There's no Arshdeep. I would say Arshdeep. Left arm pacer चाहिए इसलिए I said Yash Dayal because he was the first one who came in my But mind. I guess he's playing. Is he playing in the Asian Games? I'm not sure because the हाँ players हाँ who are going to be part he of is Asian Games. he is in the Asian Games, but I Yeah. would have loved him to be in the World Cup squad. Yeah, मतलब Hmm. that is for sure. If not Arshdeep, I would like some left arm pacer to be there because एक Yeah. left arm pacer टीम में होना ही चाहिए is what I feel. Just वो it creates a different angle. I don't know how to explain it, but having played cricket myself मेरे को पता है कि वो बैट्समैन के लिए थोड़ा difficult होता है. So yeah, mota mota these are the changes I would like. I would like Yuzvendra Chahal in the team. I would like Sky in the squad or a left arm pacer. बाकी it looks good. हाँ बट मेरा ये भी सवाल है तो सीधे भी बता सकता है कि जैसे हम लेफ्ट आर्म पेसर खिलाते हैं हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं. सो आई थिंक तो इतना भी बोलता तो भी मैं तेरे को मान लेता. बट रौनक, अंकित, व्हाट यू मेक ऑफ दिस स्क्वाड? क्योंकि आई वुड, मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस स्क्वाड. Yeah. Ankit, I do yeah. feel like I personally feel like the pace attack. I think I'm not sure कि Shardul Thakur the fourth pacer. Obviously Hardik to है, but he's not going to bowl 10 overs in all the 10 matches. And Bumrah Siraj हमें I'm pretty sure उधर कोई जा रहा भी नहीं. I think they three have fixed their spot. But instead of Thakur, I'm not sure is the management thinking for Bhuvneshwar Kumar because the door looks at the exit way for Bhuvneshwar Kumar. Maybe Deepak Char as a backup. Deepak Char, Shardul Thakur. I would prefer Shardul. Sorry, I mean Deepak Char. Shardul, I mean, I'm not sure one day cricket may I think he will kind of go expensive and you want your pace attack to be as strong. And अगर देखा जाए तो I personally wanted one of Bhuvi or Deepak Char. So if Bhuvi is there, so there फिर क्वेश्चन नहीं है बट आई वांट वन ऑफ देम बट मूवी के लिए मुश्किल लग रहा है इसलिए आई फील लाइक कि दीपक सर अपार्ट फ्रॉम दैट now Sanju Samson is actually an interesting point because assuming agar Shikhar Dhawan is not picked, then I feel ईशान किशन might be the second opener. And फिर एक और चीज होती है कि फिर आपका कीपर भी शॉर्ट हो जाता है, सेकंड ओपनर भी शॉर्ट हो जाता है. इस करंट टीम में इफ यू सी यू हैव टू पिक अ बैकअप कीपर एज वेल एज शिखर धवन. सो वो एक चीज है. बट शिखर धवन आईसीसी टूर्नामेंट्स वी ऑल नो. अपार्ट फ्रॉम दैट तो अच्छी है आई मीन. बट या एक्सक्लूजन ऑफ चहल आई एम नॉट श्योर अब 15 मैन की जगह. बट व्हाई इज इट 15? आई एम प्रीटी सरप्राइज. आई मीन 16 मैन होना चाहिए था. हाँ वही 15-16 जितने भी है, वो खेलने तो 11 ही हैं, हमें उससे फर्क नहीं. बट रौनक, व्हाट डू यू मेक ऑफ एनी चेंजेस इन योर 11? या अगर तू अपनी 15 बताएगा, 16 बताएगा, आई जस्ट टेक इट. कितने तेरे इसमें से यू काइंड ऑफ अग्री विद द नेम्स? मैं एग्री करता हूँ. आई मीन मुझे मेरे भी काफी चेंजेस हैं इसमें. अग्री करता हूँ रोहित से, गिल से, कोहली से. either of an Iyer or Rahul, मतलब बोथ को भी ले जा सकते because Iyer is not fit depending upon how he plays because अब वो ODI खेलने वाले सीधा एशिया कप में if he is available. उससे पहले अपन कोई ODIs नहीं खेल रहे इस सीरीज के बाद. तो how is Iyer's fitness और directly वर्ल्ड कप में खिलाना, again
the same old mistakes that we have done in the past कि player आ रहा है सीधे squad में fit in हो रहा है and before the World Cup there is no match practice nothing और फिर वर्ल्ड कप में आके बोलता है आई हैव वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे आके बोलते हैं कि आई डिडंट हैव पर्टिकुलर प्रिपरेशन फॉर दिस आई मीन आई डिड नॉट हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट so I don't want to hear that reason again after the World Cup even if we lose or win so if I do not want to hear the reason I can have one exception either of Rahul Iyer दोनों में से कोई एक जो भी अच्छा खेलेगा should go ahead not both of them in my personal opinion बाकी जिसका जो opinion है I'll consider that for sure बाकी Hardik is for sure there Jadeja is there Akshar is an interesting yes he can be but Kuldeep for sure is there Bumrah Siraj Shami no doubt even Bumrah I mean how he plays in the Ireland series and post that in the Asia Cup will be a big crucial factor क्योंकि उनका action भी I believe थोड़ा सा change हुआ है when I see his Instagram videos and all action change हुआ है is he you know effective in the same manner speed is the same because अगर उनका action change हुआ और speed कम हुई है and if he is not in the full flow should we risk him just for the sake of it क्योंकि back surgery के बाद the bowler does not remain the same let's be honest about it बैक सर्जरी के बाद बॉलर के काफी चेंजेस आते हैं तो आई एम 100% श्योर अगर बुमराह मतलब इन माय पर्सनल ओपिनियन अगर बुमराह खेल रहा है आई वुड बी मोर देन हैप्पी आई मीन आई विल बी द बेस्ट ऑडियंस फॉर इंडियन क्रिकेट अगर बुमराह खेल रहा है इन हिज फुल पोटेंशियल लेकिन अगर नहीं है आर वी रिस्किंग इट आई हैव अ डाउट ऑन दैट बट बुमराह सिराज शामी इफ दे आर थ्री इफ दे आर अवेलेबल फिट fully ready to go this is my pace for sure Kuldeep is there Thakur is still doubtable to an extent तो चार पांच मेरे कुछ चेंजेस हैं आई वुड लाइक टू इंक्लूड मे बी सूर्य कुमार यादव इफ नॉट हिम रिंकू सिंह नॉट बिकॉज व्हाट ही हैज डन इन द आईपीएल जस्ट बिकॉज एक प्रॉब्लम हमको हमेशा आती है अपन ने जितने भी वर्ल्ड कप जितने भी चैंपियंस ट्रॉफीज जितने भी टी20s हारे हैं ना सब में एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम आई है दैट वी डू नॉट हैव अ फिनिशर I don't consider Hardik Pandya or Jadeja to be a finisher in any context. जो मतलब दोनों गेम जिसके पास हो कि अगर रिक्वायरमेंट है 10 बॉल में 20 रन मारने की दे कैन हिट फॉर श्योर दे कैन मार सकते हैं लेकिन हमने करते हुए नहीं देखा है मोर ऑफ वी डू नॉट हैव दैट व्हाट डू यू से नंबर्स टू जस्टिफाई हार्दिक पांड्या के नंबर्स में देखता हूं इन ओडीआईज इन टी20s does it justify his spot as a finisher no in my opinion no blatantly तो मैं उनको एज अ फिनिशर के रोल में देखता नहीं तो जो अपनी प्रॉब्लम रही है पिछले 5 साल से 10 साल से वही सेम प्रॉब्लम को अपन ढो रहे हैं इन सेक ऑफ द नेम्स ऑफ इट और एक फिनिशर अपन ने टीम में लिया नहीं जो प्रॉपर फिनिशर हो वो है ही नहीं टीम में मिसिंग है दैट इज माय वन पॉइंट या तो रिंकू सिंह को किसी को भी लो आई डोंट माइंड रिंकू सिंह ध्रुव जुरेल हालांकि ध्रुव जुरेल का बहुत छोटा सा करियर रहा है बट रिंकू सिंह का एक काफी अच्छा करियर रहा है इन डोमेस्टिक क्रिकेट इन आईपीएल तो आई बिलीव इफ ही कुड हैव बीन इंक्लूडेड वो अपने एक्स फैक्टर बन सकते थे दैट इज माय क्योंकि ना राहुल आपके फिनिशर है ना आपके अय्यर फिनिशर है ना हार्दिक पांड्या फिनिशर ना जडेजा फिनिशर है तो वी आर मिसिंग दैट फिनिशर रोल फॉर श्योर एंड वो अपने को चाहिए वर्ल्ड कप में बिकॉज वी विल बी प्लेइंग इंग्लैंड वी विल बी प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया जो अगर फ्लैट पिच मिल गई 350 400 मारने वाले will we be able to change it I have no idea about I think I kind of agree with your points and मेरे इसमें I think 3 या 4 changes है if I talk about my opinion I don't think Sanju Samson will be a part of it and जो तेरा finisher वाला point है I think India might see Surya Kumar Yadav do that role only because he is a bit flexible in the batting order और जहाँ तक का सवाल है KL Rahul या ईशान किशन का I just feel India will go with KL Rahul in the World Cup as a wicket keeper. For some reason, I have this gut feeling कि yes, Rishabh Pant, I think Krishna ने पूछा था will Pant be fit? No, he won't be fit for the World Cup. Bumrah का yes, he'll be back in the Ireland series and then we will see कि क्या progress है. Apart from that, I have a feeling Shardul Thakur will play only because recent suggestions तो यही आए हैं कि they want him to be that middle overs में get that wicket taking वाला option when the spin is not working. और हम शार्दुल ठाकुर से हम ओपनिंग में बॉलिंग करवाते हैं नहीं वी ओनली get him in the middle overs and he gets the job done most of the time वो विकेट निकाल के दे देते हैं so and with an added advantage that he can bat I think that adds variety in the 11 so I think Shardul Thakur will stay I'm still doubtful about Mohammad Shami I think वो जो Asian Games में जो squad जा रही है you might see a few changes from that team maybe like Arshdeep Singh जो मैं अमुक से मैं agree करता हूँ I think a left arm seamer
is something which is needed. Because any team, if you see Mitchell Stark, you see Trent Bolt, these guys have troubled the best of the batters. So I'm not saying Arshdeep Singh, has that sample space, but that added advantage. Zahir Khan, for example, in the 2011 World Cup, what an asset. Ashish Nehra, proper supporting role, he did really, really well. So I think yes, maybe an Arshdeep Singh could come in. I still don't know whether how does Yuzvendra Chahal fit in the 11. I want to see him in the team only because he has been doing really well. I think purple cap winner for very recently in the IPL as Yeah. well. So, and for some reason, I don't know why Yuzvendra Chahal is not picked up in crunch situations and in crunch games. I think he has that ability. I think अभी बहुत recently I think उन्होंने बात किया था कि यार I'm starting to bowl in the death overs as well for Rajasthan Royals. So I think that is an added advantage. In India, playing Kuldeep Yadav and Yuzvendra Chahal for some reason is a must for me. You know, if they Yeah, are at their peak, this pair could literally get to you. The game in the middle over itself. I think वो death तक फिर बात आएगी ही नहीं if these two yeah, are in the team. 100%, 100%. Yeah. So that Also, yeah. yeah, continue. नहीं वही बोला था. That is pretty much my opinion. Yeah. Okay. Also, I don't see Jadeja and Akshar playing in the same team, matlab Yeah. in the 11 together. So, I think एक चीज जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है is that the point you made about शार्दुल ठाकुर. I think अगर शार्दुल ठाकुर खेल रहा है तो he is playing maybe as a third or even as a fourth seamer. ठीक है, बट वो फोर्थ या थर्ड सीमर का जो स्लॉट है, हार्दिक इज ऑलरेडी देयर टू फिल इन फॉर इट. Exactly. ठीक है, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हार्दिक और शार्दुल दोनों 11 में ना हो. ठीक है, दिस कैन आल्सो बी अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी, एंड इन दैट केस वी माइट गो विद बुमराह, सिराज, शमी, और whoever the third pacer is. If is Arshdeep, then Bumrah, Siraj, Arshdeep, Kuldeep, Chahal, as well as Jadeja. So we'll have 3 pacers plus 3 spinning options, which is not a problem in India. It can be altered at a location like Dharamshala, where we're playing New Zealand, because udhar we need maybe 4 pacers and 2 spinners at a location like Dharamshala. But again, also एक और चीज जो मेरे को तुम तीनों से पूछनी है is that this squad or whatever we are discussing, again there is no bowler in the top 5 or the top 6. If we are saying ki Hardik is at number 6 in the batting lineup, so yeah, there are a bowler. There is a bowler. But you look at Australia, there is Glenn Maxwell in the top 6. Okay. You look at a team like England, there is Moeen Ali, there is Joe Root who can come in and just bowl. तो bowling कर सकते हैं. ठीक है, South Africa देखोगे, there is Aiden Markram who can come in and just bowl. ठीक है, तो the point is, जो भी टीम देखोगे, every team has some or the other player in the top 6 or top 5, if we can say, who can come and bowl. ठीक है, इससे क्या होता है, कैप्टन के शोल्डर्स पे जो प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है. बिकॉज अ विकेट फॉल्स, यू ब्रिंग इन दैट बॉलर हु इज अ पार्ट टाइमर, वो तेरे को 3-4 ओवर डाल देता है, वो 3-4 ओवर का बोझ तेरे शोल्डर से कम हो गया. प्लस यू गिव द ऑप्शन ऑफ अ बैटिंग. सो my question is to all three of you, is it the right time to bring in someone like Deepak Huda in the squad, because he can also roll his arm over. It is very difficult, मेरे को मालूम है, it is very difficult, because वो बीच मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर हैज ऑलवेज बीन इंडियाज प्रॉब्लम. ठीक है, टॉप 3 फिक्स होते हैं, 7-8 से लेके सब फिक्स होते हैं. वो जो 4-5-6 वाला स्लॉट है, 6 तो हार्दिक बोल सकते हैं अपन, 4 और 5 वाला जो स्लॉट है, उसमें देयर इज श्रेयस अय्यर, देयर इज सूर्य कुमार यादव, देयर इज ऋषभ पंत तो नहीं है अभी, बट और भी देयर इज केएल राहुल. फिर नाउ वी आर लुकिंग एट अ प्रोबेबल रिंकू सिंह और एनीवन हु वी आर टेकिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक सर्किट. सो just because you want a bowler, is it feasible to bring in someone like Deepak Huda or anyone else into the 11 or the squad? I personally agree. I think I think Abhinav और Ronak sir, I mean दोनों के चेहरे से लग रहा है कि they might not agree, but I do feel like कि एक चीज जो है, and इसके लिए स्पॉट भी आई एम नॉट आस्किंग लाइक कि टॉप 5-6 में से कोई आना चाहिए. आई वुड से कि जो अक्षर पटेल का स्पॉट है, लाइक लेट्स सी सीरियसली कि आर यू गोइंग टू प्ले अक्षर विद जडेजा, एंड एज अमुक मेंशन्ड और आई गेस अभिनव मेंशन्ड कि वो पॉसिबल ही नहीं होने वाला है. So अक्सर आप तब भी खिलाने वाले when Jadeja is not going to be playing or might take a rest. But if you consider Deepak Hooda for that spot, like instead of Akshar Patel, I would say gives you that luxury कि वो top 5 में भी बैटिंग कर सकते हैं. And as Amok mentioned, you need a bowler like and is someone जो एक right arm वाला factor लाते हैं. अब Akshar Patel is like similar to what Jadeja does, and two spinners तो है. But if we consider that factor,
then might be a possibility. But then the question rises कि दीपक हुड्डा the pattern ने कितना impress किया अपने. I hardly think, I guess couple of ODIs वनडे मैचेस से खेले होंगे, वो भी एक फैक्टर है. बट चांसेस तो है एशियन गेम्स में खिला सकते हैं. बट अगेन नाउ अभी ये सब हमें लगता है व्हाट बीसीसीआई इज थिंकिंग, व्हाट they are directing. They might also think ki Ravichandran Ashwin, like I was reading an article yesterday that the BCCI official, one of the official mentioned ki they are not ruling out the chances of Ashwin playing the World Cup or even Surya Kumar Yadav. So बहुत सारी चीजें है. But yeah, I kind of agree with what Amok has mentioned कि Deepak Hooda as a all-rounder, I don't think so जो matches भी खेला he has done anything bad. But then again IPL का form भी might be considered, so maybe difficult. But yeah, I mean अभिनव रौनक सर क्या लगता है आपको? मतलब it नहीं यार, depends. If again, मतलब sorry to cut you, but it depends. अगर तू मेरे को पूछ रहा है कि दीपक हुडा in place of someone like सूर्या, तो मैं नहीं ही बोलूंगा obviously, because it's not like, see, हर जगह पे you cannot look like कि ये मेरे को bowling भी दे रहा है, ये मेरे को batting भी दे रहा है. If you're thinking that way, फिर तेरे bowlers हैं किस लिए? If तू bowling भी batsman से ही कराने जाएगा, तो why are the bowlers there in the first place? So it's not like not sure Virat Kohli will have a ball in the World Cup. I mean bowling करते नहीं है, but we'll like to see that. possible हो सकता है, but yeah, अभिनव बोल. नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आई थिंक दिस इज द टॉपिक जो हमने बहुत डिस्कस करा है कि आई थिंक इंडिया लैक्स दैट एबिलिटी जहाँ पे देयर इज नो बॉलर इन द टॉप 5 या टॉप 6 हु कैन रोल हिज आर्म ओवर. आई थिंक वो हो जाता ना, देन देयर वी वुड हैव हैड. But guys, just one more question. I think sorry Abhinav to cut. What do you guys feel like? And Abhinav, starting with you itself, I think एक और जो point है, जैसे left arm pacer की बात करी थी, someone mentioned कि left hand batter at the top. So you guys feel like कि वो भी एक topic रहेगा, I mean it's good to discuss. I will try to fit in Ishan Kishan in the 11 somehow, only because of that left-hander ability. Because right now most of the people think कि KL Rahul is that wicket keeper for the World Cup. I for some reason have my doubts कि KL Rahul की keeping ability for 9 games will play 9 games at least in the round robin format. I think I still have some doubts when you're playing in India, you're keeping wickets to Kuldeep, Jadeja and Chahal. If Chahal if these guys are included, and these are proper spinners, so I would prefer like a proper wicket keeper behind the stumps over a wicket keeping batsman जो कि KL Rahul है. But at the same time I don't know how the other batsman gets in the 11 as well, because I want Surya Kumar Yadav to play that finisher wala role, because alongside Hardik, जैसे कि अमोग ने कहा कि yes, Hardik and Jadeja are not my proper finisher. I think we lack that. Surya Kumar Yadav can do that because he's flexible around that spot. He can play at 6, 5 and 4. So I think that could be done. I think it is between Shreyas Iyer and Ishan Kishan, in my opinion, what India thinks in that batting order. Only to add that left-hander wala spot, because Shubman Gill is doing really well in the white ball format. So do not want to get him out and play like a Yashasvi Jaiswal or a Shikar Dhawan in the 11. So I think that 4th number wala spot is where I see Ishan Kishan playing for India. Yeah. So no Samson for World Cup? No, I don't have Samson in my World Cup squad. Even me too. Even I don't. Or in that case, if Virat is going to play number 4, then Ishan Kishan can come in at number 3. But मैं वो risk नहीं करूँगा. मतलब I wouldn't do that. यार रौनक बहुत. I mean, अमोक कौन सा topic तूने लाया? I think that will be, I mean बहुत discussion हो जाएंगे इस बात पे. अगर अमोक पूछता कि कर सकता है, तो मैं शायद डिबेट कर भी पाता. विराट नंबर 4 पे जाएगा, ये तो मैं डिबेट ही नहीं करूंगा. मतलब ये तो आउटराइट नो है मेरे लिए. तो हम वर्ल्ड कप पकड़ा देते हैं, हमारा जो भी चांस है ना जीतने का, हम वो भी जाने देते हैं. ऐसा होगा वो चीज. And last thoughts Ronak on this point, and then we have like one small topic to discuss after this. Yes, absolutely. मतलब जो 11 बनाई है, बहुत सारे डिस्कशन से मैं एग्री करता हूँ कि अपने पास एक लेफ्ट हैंडर फॉर श्योर टॉप 5 में होना चाहिए. दीपक हुड्डा के पॉइंट से मैं आउटराइटली डिसएग्री करता हूँ. मतलब उन्होंने सिर्फ आयरलैंड टूर में एक 100 मारा था. उसके अलावा आज तक मैंने कोई परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में कहीं नहीं देखी. कोई भी चांस मिला उसको, मतलब मैंने देखी नहीं है इन डोमेस्टिक, इन आईपीएल, इन इंटरनेशनल. उसके बाद जितने भी मौके मिले उनको, तो आई एम नॉट श्योर कि दीपक हुड्डा कैसे फिट इन होंगे. दैट इज माय पॉइंट. हाँ, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं पिछले 2-3 साल से बना रहा हूँ, दैट इज इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या इन द टॉप 5, not at the number 6 position. अगर वो number 5 या number 6 पे आते, then you can include either Akshar Patel or Shardul Thakur in the 11, depending upon the situation, depending upon the pitch you are playing on. I mean, अगर आप वो कर सकते हैं, it would be very in the favor of you, where you will have 7 proper options of bowling जो हम lack करते हैं हमेशा से. तो हार्दिक पांड्या जो करते हैं T20s में,
गुजरात टाइटंस के लिए कि नंबर 3 पे बैटिंग कर दी, कैन ही डू फॉर इंडिया एट नंबर 4 इन ओडीआईज इज द क्वेश्चन। अगर वो कर सकते हैं तो नंबर 4 पे हार्दिक, फॉर मी पर्सनली विराट, रोहित एंड गिल आर टॉप 3 फॉर श्योर। उसके बाद वी हैव फ्लेक्सिबल ऑप्शंस। नंबर 4 पे वी डोंट नो वेदर केएल राहुल प्ले, वेयर अय्यर विल प्ले, वेदर सूर्य कुमार यादव विल प्ले, वी हैव नो आइडिया। Why not try हार्दिक पांड्या एट नंबर 4 बिकॉज वो प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं। वी हैव सीन इन ऑस्ट्रेलिया जहां पे उन्होंने अकेले बैटिंग के दम पे जिताया था अपने को मैच through his batting. So if he can do that for India in maybe say 2 or 3 years, where he can bat and bowls not 10 overs but 4, 5, 6 overs, I'll be more than happy with that. So if he can bat at number 4, that will be good. Number 5 पे मुझे भी एक लेफ्ट हैंडर चाहिए, whoever it be in the segment, मतलब जो भी आप अवेलेबल हो रिसोर्सेज उसमें से, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो आई मीन who is in the mix, जो लेफ्टी हो, आई मीन जडेजा ही है, जायसवाल वही तो है। वो खिला नहीं सकते। नंबर 5 पे जडेजा इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि हमने ट्राई किया था इंग्लैंड में जडेजा को एंड ही डिड नथिंग रॉन्ग इन देयर आई थिंक। तो जडेजा नंबर 5 पे भी आ सकते हैं। नंबर 6 पे फिर एक हमें प्रॉपर फिनिशर चाहिए होगा, एंड हु विल दैट बी? सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, जिसको भी आपको खिलाना है आप नंबर 6 पे वो खिला लीजिए। तो यू विल हैव प्रॉपर टॉप 6, जिसमें 2 आपके प्लेयर ऐसे होंगे जो आपको पर्टिकुलरली बॉलिंग करके दे सकते हैं एटलीस्ट से 15-16 ओवर्स। तो वो आपका टॉप 6 स्लॉटेड हो गया। उसके बाद आपके टॉप 6 में फ्लेक्सिबल ऑप्शन है और 2 लेफ्ट हैंडर्स हो गए। दैट इज देयर। तो आपको लेफ्ट आर्म पेसर से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शायद अर्शदीप आए नहीं आए, अगर आपके ऑपोजिशन में लेफ्ट आर्म पेसर है तो आप उनका ऑर्डर थोड़ा शफल करके अकोमोडेट कर सकते हैं लेफ्ट आर्म बैटर्स से। तो वो टॉप 6 आपकी फिक्स हो गए। फिर टॉप 7 से लेके 11 तक यू हैव एन ऑप्शन ऑफ मिक्सिंग अप प्लेयर्स। Kuldeep Yadav, Chahal for me is playing. I mean, irrespective conditions. अगर दोनों अच्छे फॉर्म में हैं and if they show their form, तो कुलदीप यादव और चहल दोनों को खिला लो। नंबर आपके 8 और 9 हो सकते हैं, 8 और 9 हो सकते हैं। नंबर 7 पे आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जो आपकी थोड़ी बहुत, फॉर एग्जांपल फॉर मी पर्सनली शार्दुल ठाकुर इज द परफेक्ट नंबर 7 फॉर एज ऑफ नाउ, जो मैं देख पा रहा हूँ आउटलेट से। अगर कोई और अच्छा ऑप्शन आता तो अलग बात है। नंबर 7 पे मैं शार्दुल ठाकुर खिलाऊंगा। नंबर 8, 9 कुलदीप चहल। नंबर 10, 11 इज बुमराह एंड सिराज, अगर दोनों फिट एंड अवेलेबल हैं तो। वरना आई मीन अगर बुमराह फिट एंड अवेलेबल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ही प्लेज, तो शमी और सिराज, या फिर शमी के जगह कोई एक लेफ्ट आर्म पेसर आप मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। दिस विल बी माय लेवल। So I kind of agree with most of the points you said, and I agree. I think we need at least 2 left-handers in the top 7. If Jadeja is one, I think we need one more. Could be Kishan, could be Rinku Singh, could be anyone. So, but yeah, I think this is what. और ये तो हमने बात करी है, given that everyone is fit. Okay, हमने अभी we still have about 11 games to go. Till we reach that point. Asia Cup में you could see there are 11 games. I mean, I don't see 11 ODIs to be played. Yeah, there are 11 तीन अपने वेस्ट इंडीज के हैं, उसके बाद एशिया गेम्स है, राइट? एशिया कप में 5 है, and then just before the World Cup we play 3 against Australia. In September against Australia. Yeah. We play 3 against Australia. Yeah, right. रौनक ने जब लेफ्ट आर्म सीमर्स वाली बात करी ना, मेरे को फट से ट्रेंड बोल्ट याद आया और धर्मशाला का ग्राउंड याद आया। Yeah, but yeah, anyways, this is what we think, and I think जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है, यहाँ पे तो अभी एक्सपेरिमेंट का तो टाइम गया। अभी you just have to have your perfect 15 वाला जो पूल आपके दिमाग में है। होपफुली अजीत आगरकर went to the West Indies to talk about this कि अभी बहुत चेंजेस नहीं चाहिए मेरे को। अगर तुम फिट हो तो मैच खेलो चुपचाप, वरना बाहर बैठो। सिंपल सी बात करने के आई थिंक, एंड दिस इज नीडेड एज वेल, बिकॉज वी वोंट सी एनी अदर टीम डू दिस, क्योंकि अपने पास वो लग्जरी नहीं है दैट वी कैन एक्सपेरिमेंट दैट मच। अदर टीम्स कैन ओनली बिकॉज दे हैव लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, लाइक मिच मार्श, कैमरन ग्रीन हो गए, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल हो गए। हम नहीं कर सकते वो। सो आई थिंक we need these players to stay fit but at the same time have that match experience. So moving on, last topic हम discuss कर रहे हैं, is anyone following the major league cricket? Yeah. To an extent, yes. To an extent, Just the scoreboard. Whatever. I think anything works only because I just want to know your opinion on the tournament. Like, of course, 19 games is not a big sample space, but still, what do you make of the tournament, the first season, the level of cricket? Because I have a lot of negative opinions so far based on the local cricket I have seen. But apart from that, I feel this league can develop real fast if there is a better player participation.
Ronak, Amog, Ankit, whatever order you want to talk about. My simple point is that I mean I don't agree with the rules first of all. बहुत सारे negatives है मेरे पास उनके rules को लेके. And the second thing is they need to be very flexible about the local talent that they have. कि अभी टू बी ऑनेस्ट दे डोंट हैव एनी लोकल टैलेंट जो प्रॉपरली आप लीग फेज में कह सकते हो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं विद द लाइक्स ऑफ फाफ डू प्लेसी, डेविड मिलर, कगिसो रबाडा, राशिद खान, इनके अगेंस्ट compete कर पाए वैसा इंडिया में हो सकता है. बट इन यूएसए आई हाईली डाउटेड कि आपके पास प्लेयर्स हैं कि आप उस लेवल पे compete कर सको. तो इसलिए मे बी वी सी कि कुछ मैचेस में कंपटीशन बहुत हाई है और कुछ मैचेस में एकदम स्लम्प है जहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं होता है जस्ट बिकॉज उनके लोकल प्लेयर्स बहुत ही आई मीन नॉट डिमीनिंग देम बट द फैक्ट इज फैक्ट मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं दिखता है. तो आई बिलीव देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे द वे इट इज इन कि आप वेस्ट इंडीज में कहते हैं सॉरी साउथ अफ्रीका में कहते हैं कि एक दो प्लेयर्स आपको इस डिसेंट के रखने पड़ेंगे. For example, उसी फैक्टर पे आई थिंक इन मेजर लीग क्रिकेट फॉर एटलीस्ट 2 seasons यू विल हैव टू से कि लोकल टैलेंट्स एक या दो का कैप फिक्स कीजिए 11 में. इफ यू कैन डू दैट आई थिंक इन द कमिंग सीजंस वहां पे प्लेयर्स को आप डेवलप कीजिए पहले उसके बाद फिर मेजर लीग क्रिकेट में लेके आइए. आप अपने स्क्वाड में रखिए मतलब जो 20 का स्क्वाड है आपका उसमें रखिए आप लोकल प्लेयर्स को बट ग्रूम कीजिए फॉर 2-3 इयर्स जैसे आईसीसी सॉरी आईपीएल करती है विद लोकल टैलेंट्स. आप बहुत प्लेयर्स को देखते हैं कि पहले 4-5 साल खेले ही नहीं है उसके बाद पर्टिकुलरली बन के आते हैं आईपीएल में फिर खेलते हैं. तो इन मेजर लीग क्रिकेट आल्सो यू कैन ट्राई दिस वे की जहां पे जो लोकल टैलेंट है उसको आप ग्रूम करें फॉर पर्टिकुलरली 2-3 इयर्स उसके बाद आप मेन टूर्नामेंट में लेकर टू मेक इट कॉम्पिटिटिव एंड फॉर व्यूअर्स टू वॉच इट. वरना अगर मैंने 19 मैच देखे हैं मतलब 19 मैच फॉलो 19 मैच तो नहीं मतलब 15-16 मैच फॉलो किए होंगे उसमें से 3 या 4 मैच मुझे कॉम्पिटिटिव लगे उसके अलावा भले ही रिजल्ट्स क्लोज रहे हो बट कंपटीशन दिखाई नहीं दे मेरे को. तो आई बिलीव दैट कैन बी चेंज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड one thing which I like is distribution is right. मतलब 5 टीम जो किया ना उसमें distribution of players in foreign capabilities is right. मतलब जो foreign talent आया वो सही है. I mean the way I see the inclusion of Pakistani players have made it even out. The absence of Indian players. Indian players नहीं है तो उसका absence जो है पाकिस्तानी players ने अच्छे से fill किया है. Major League cricket can grow exponentially in the next 2-3 years. बस कुछ रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी उनको बस दैट इज द ओनली टेक अवे फॉर मी. अंकित ये क्योंकि मैंने तो बहुत सारे मैचेस देखे ये लेकिन ओनली बिकॉज मेरे लिए टाइम थोड़ा इजी है टाइम जोन टू फॉलो. सो आई थिंक इन माय ओपिनियन द ऑर्कस टीम आई थिंक जो ग्रीन कलर के कपड़े पहनती है आई थिंक दैट इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग. आई थिंक दैट इज अ वन साइडेड टीम. Really disappointed the way the LA Knight Riders के batters have played. I think they have been probably the poorest amongst all because most of the batters have not impressed. There was one guy yesterday, Milind Kumar, if I'm not wrong, Yeah. he scored for Texas Super Kings. But that is probably the only best innings I've seen. And then I saw MI New York, the opening pair, I don't remember the name, they gave them a good start as well. So apart from that, I do not remember much of it. जो कि मैं बोल सकूं, yes, the start was really good. There was a leg spinner in this team itself, the Texas Super Kings, Mohammad Mohsin, I believe is his name, but he started really well. Apart from that, I think it has all been played by the international cricketers यार, क्योंकि और रौनक के पॉइंट से मैं completely agree करता हूँ. I think it was way too soon to add this quality of cricket, against USA. There's one thing you kind of, develop step by step. I think this could hamper the players who are already playing, and for some it could be really good. But consistently, we have seen at least 2 wickets, 3 wickets being down in the power play, and those are usually the local players who play at the top when they're facing, say, Rabada, when they're facing Norkie, all these players. Australia की तो पूरी team खेल रही है, if I'm not wrong. वहाँ पे literally from 1 to 9, everyone is a part of this league. So yes, I do have a few doubts over the quality of cricket. But yeah, Daniel Sams yesterday from 92 for 5, I think they chased down 172 in the end. So my opinion is still a bit split. I'm still not in the favor of accepting this league yet. But Ankit, Amog, what do you think? I mean, abhi to obviously it's first season, but yeah, I mean that's the thing. When 7 overseas or I guess 6 overseas, तो मुझे इस frame में दिख रहा है. That's the thing. I think इतने overseas players and obviously बहुत सारे जो players हैं, I think kind of they have a good experience in franchise league or specifically in this format. I think Faf du Plessis
He knows the every kind of he has gone through all the situation in T20 cricket and अभी तो lead कर रहे हैं and also yeah, but international cricketers सीखने की then you don't get a chance and maybe the league is thinking कि हम international cricketers को रखेंगे तो the league may get the traction, but it doesn't go that way for the local players as even Abhinav mentioned. So that's one thing, but let's see how it goes. Obviously, first I think for me it was, I guess, South Africa T20 league maybe same tha, but the kind of structure of domestic players was way better. Abhi to US, I'm not sure how it will go for them as a league for local players. Right, I agree. Amog? Well, हाँ, I do agree. I think मगर मेरे को ऐसा भी लगता है on a scale of 1 to 10 कि it is too early to make an opinion अभी, because जैसे अभिनव ने he rightly mentioned कि 19 games is a very less sample size, but I think US में cricket will increase in the upcoming 2 to 3 years is what I personally believe, because there is a lot of investment जो पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है. Some of my relatives live in the US, so they were telling me that there are a lot of developments in cricket especially that are happening. There are a lot of clubs that taking up the sport. So I think grassroots से अगर start करेंगे तो there will it will take some time at least, but I think एक associate nation के हिसाब से अगर देखा जाए तो I think it is really good कि a country is developing itself from the grassroots level sport में आने के लिए, अच्छा करने के लिए. तो yeah, I think ये जो overseas players वाला rule तुम लोग बोल रहे हो वो I do agree. मैंने personally बहुत closely follow नहीं किया league. I haven't got the opportunity to, but I will do it certainly in upcoming days. But yeah, I still feel it is too early to judge कि वो अच्छा है या बुरा है, which we are not doing anyways. But I would like to give it some time. But for cricket, I think it is good कि US is developing its grassroots levels and it's at least generating interest in its youth about the sport, because US में cricket is not that known. It is all about baseball and all Right. those. But I think this is a good thing for cricket in general कि एक league है, even the franchise based cricket is taking over everywhere now. So I think I read an article which was comparing it to the football standards. Ki cricket is soon going to look like Premier League and all that stuff. But we don't agree to it obviously because ICC won't let it happen. That is Yeah. a complete different world, a complete whole new topic. But I think it's good for cricket that a nation is developing from its grassroots. So we'll have to follow the league closely and see how it goes in the next couple of years. So exciting prospect is what I would say now. True. I agree with probably everything you guys have said. And I think आज के लिए तो हमने काफी कुछ बात कर लिया. I think थोड़ा जुबान को आराम भी देते हैं क्योंकि बहुत क्रिकेट हमने बात कर ली. And let's hope कि rain doesn't. क्या मिस्टर बोल रहे हो? प्रधान ने जस्ट बिफोर दैट मिस्टर प्रधान ने एक पॉइंट रेज किया था. उनके पास माइनर लीग क्रिकेट के अलावा कोई और डोमेस्टिक लीग के बहुत सारी लीग्स हैं, बट दोज आर स्कैटर्ड. मतलब हर एक स्टेट, जैसे यहाँ पे इंडिया खेलती है अपनी अपनी पर्टिकुलर डोमेस्टिक लीग्स, वैसे खेलते हैं हर एक स्टेट के अंदर जो किसी से भी सैंक्शन नहीं होते. बस दो इसके एमएलसी मेजर लीग क्रिकेट और माइनर लीग क्रिकेट के अलावा दो डोमेस्टिक लीग्स हैं उनके जो प्रॉपर्ली रन होते हैं मेरे ख्याल से, which I have heard about, not seen or followed, but heard about is अमेरिकन क्रिकेट लीग एक फॉलो करते हैं वो लोग, जहाँ पे 30 या 40 टीम में कुछ उनके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर. दैट इज द बिगेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो भी वो करते हैं. और दूसरा है बांग्लादेशी क्रिकेट लीग. सरप्राइजिंग होगा कि वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट लीग का नाम रखा है बांग्लादेश क्रिकेट लीग इन यूएसए, बट दैट इज देयर. जहाँ पे 10-12 टीम्स हैं और एशियन कम्युनिटीज खेलती है मोस्टली उसमें. तो दैट those are the two prominent leagues. बाकी और तो कुछ नहीं है, बाकी सारे अनसैंक्शनड है. मतलब अपने में खेल लो और क्लब लेवल पे खेल लो तो अलग बात. Yeah, exactly. So yeah, that is the end of this show and end of this stream. Thank you so much everyone in the chat. Thank you so much Amog, Ronak and Ankit for joining me. And let's hope कि यार हम अगले बार बारिश के ऊपर इतना फोकस ना करें and we don't talk about ifs and buts in the next game. We get a result, we get proper cricket to see as well. And thank you so much everyone in the chat. Pradhan, Krishna, Akshat, there were Sanmay as well, other Anshul as well, Muskan, Drishti, Mohit, everyone. Thank you so much for joining. And like the video, subscribe to the channel. अगर आप ये live stream के बाद देख रहे हो video, so please like the video, subscribe to the channel. Increase our subscribers count. Free है एकदम. Attendance लगाओ अपनी. I think 12 या 15 लोगों ने attendance लगाई है. Because there is a stat जो कि मैं देखता हूँ हमारे analytics में, more than 70% of the people who watch the video don't subscribe to the channel. So we want you guys to be a part of this family, and I think you can do that by just subscribing and following us on every
social media platform. Thank you so much for all the support you guys are showing us on Instagram as well very recently. We are very close to, I think we are heading towards 10K at the moment. So help us reach there really, really quick. Follow everyone on social media platforms, Ronak, Ankit, Amog, myself as well, if you want to talk about cricket or anything else. And we'll see you guys in the next show. Thank you so much. Good night. Good night.